Hi guys, this is Yasir and you're watching DevBot Plus. How to push code to the GitHub. React.js कोड पुश करेंगे और देखते हैं कैसे हम GitHub पर कोड पुश करते हैं. सबसे पहले let's create a app. Git React.js app. क्विकली हम डेस्कटॉप पे एक ऐप बना लेते हैं with npx. Alright, so React.js app has been created. Let's get into a folder. नोड मॉड्यूल्स पब्लिक्स src जहाँ पर कोड रिजाइड करता है, git ignore package.json readme md markdown फाइल yarn lock, तमाम तर चीज़ें पुश होंगी एक्सेप्ट नोड मॉड्यूल्स, क्योंकि git ignore में हमने को मेंशन कर दिया है. कोई भी फोल्डर, कोई भी फाइल्स अगर हम पुश नहीं करना चाहते वी कैन इंक्लूड हियर. अच्छा, तो let's yarn start. ये लैंडिंग पेज React.js जो React.js ऐप बॉयलर प्लेट के साथ आता है, क्रिएट रिएक्ट ऐप इसके साथ. नेक्स्ट स्टेप हम एक रेपोजिटरी बनाएंगे, न्यू रेपोजिटरी विद सेम नेम. आई प्रेफर public or private depending upon your choice. Public available सबके लिए होगी, private it's a restricted use of this repository. Public करते हैं इसको. readme file क्योंकि हमारे पास already है इसके अंदर, we don't want, so let's create the remote repository. अच्छा, तो ये हमारी रिपोजिटरी क्रिएट होगी. लेट्स क्विकली जंप इनटू द ऐप एंड कंट्रोल सी दिस. कोई चेंजिंग करते हैं हम. लेट्स चेंज समथिंग इन अ रीडमी फाइल. लेट मी जस्ट
git status in order to see what has been changed. Yeah, changes को ऐड करने के लिए git add dot represent everything, git status again to see कि जो हमारी चेंजेस जो मॉडिफिकेशन हमने की है वो हो गई स्टेज्ड. गिट रिस्टोर, लेट्स से कि अगर मैं इसको रिस्टोर करना चाहूँ तो व्हाट आई कैन डू मीन्स रिवर्ट करना चाहूँ अपने सारे चेंजेस, तो I'll do git restore and then staged and file name. Git status again. देखें ये रिस्टोर हो गई है फाइल, रिवर्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन में. लेकिन हम अगेन ये आज का काम नहीं है, हम इसको पुश करना चाह रहे हैं चेंजेस को. तो लेट्स डू दैट अगेन. गिट एड एंड सी इट हैज़ बीन एडेड. अब कमिट करेंगे. गिट commit and flag readme change 1 insertion 70 deletion वो जो readme को हमने उसमें जो कंटेंट था हमने डिलीट किया एंड देन वी एडेड 1 line, that's it. सो अब हम क्या करेंगे कि ये हमारा स्टिल द कोड इज़ इन आवर लोकल मशीन. लोकल मशीन पे जो रेपो है हमारा, उसको हम रिमोट पे जो अभी हमने क्रिएट किया है उसके साथ इंटीग्रेट करेंगे, लिंक करेंगे. वो कैसे होगा? गिट रिमोट एट origin and then the address of our repo. Sorry, there you go. And we have github.com and your username, yes, and the repository name, which is code push github .git extension. There you go. So एक चीज़ हम करना भूल गए, वो है to change master to a main. Let's see we can do it right now. अभी हम चेक कर लेते हैं हमारा क्या है. git branch master, इसको मेन में करेंगे क्योंकि ये रिकमेंडेशन है from a GitHub itself. So how we can do this thing? Git branch. Let's check it again. Yes, we are in the main branch. अब हम पुश करेंगे just one liner. U represent upstream, it's a flag. Git push U and then origin. There you go. अब हम चेक करेंगे. Let's see. So the code has been pushed. वही फोल्डर्स पब्लिक src, क्योंकि नोड मॉड्यूल्स गिट इग्नोर में है इसलिए वो पुश नहीं हुआ. एंड दिस इज़ द चेंज वी मेड इन रीडमी मार्कडाउन फाइल के अंदर. तो ये था कि हम किस तरह React.js कोड पुश करते हैं. नॉर्मली ये काफ़ी अप्लाई करता है काफ़ी कोड्स के अंदर. इट्स अ प्लेन जावा स्क्रिप्ट, यू डू इट द सेम वे. और इसी तरह काफ़ी डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी इसी तरह होता है.
तो ये था, स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस।